Hello, good morning students. In our last class, we have completed our exercise 3B. The chapter name is Decimal. So in this class, we are going to start our exercise 3C. In this exercise, all the questions are based on multiplication of decimal number. And the question number 1 is, find the product 73 decimal 92 into 10. If we multiply the decimal number by the 10, 100, 1000, so there is some rules. See the rule. On multiplying a decimal by 10, the decimal point is shifted to the right by 1 place. जब हम किसी एक डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट हमारा राइट हैंड साइड में 1 प्लेस शिफ्ट कर जाता है, क्योंकि 10 में हमारा नंबर ऑफ ज़ीरो कितना है 1, इसीलिए हम लोग का एक डेसिमल हम लोग का शिफ्ट कर जाता है. जो डेसिमल 73 डेसिमल 92 है वो हमारा हो जाता है 739 डेसिमल 2. सो द आंसर विल बी 739 decimal 2. This is the answer. Similarly, come to the next question. Find the product 2 decimal 397 into 100. On multiplying the decimal number by the 100, there is rule. On multiplying a decimal by 100, the decimal point is shifted to the right by 2 place, because in 100 the number of 0 is 2. So the decimal is shifted by right 2 digits. This decimal is shifted 2 digit left. That means this decimal is come in this side. So the answer will be 239 decimal 7. Now come to the third question. Find the product 6 decimal 7314 into 1000. The rule is, on multiplying a decimal by 1000, the decimal point is shifted to the right by 3 place, because in the 1000 there is number of 0 is 3. So we will shift the decimal right side by 3 place. So the answer will be 6731 decimal 4. We will shift the decimal point by 3 digit. 676,731 decimal 4 is the answer. Now come to the next question. Find the product 5.4 into 16. Now you all will notice that there is a multiplication of a decimal by a whole number. There is a two number, 5.4 or 16. 5.4 is a decimal or the 16 is the whole number. So there is one rule. On multiplying the decimal number by the whole number, multiply the decimal without the decimal point by the given whole number. मतलब कि जो डेसिमल नंबर का नंबर है 5.4, उसका हम लोग डेसिमल हम लोग छोड़ देते हैं, 54 हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं, और जो 16 है उसको 16 कंसीडर करते हैं, और हम उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 54 इंटू 16. एंड द सेकेंड रूल इज, मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट टू हैव एज मेनी प्लेसेस ऑफ द डेसिमल एज आर देयर इन द गिवन डेसिमल. जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जब हम लोग को जो आंसर मिलेगा उस आंसर को हम लोग क्या करेंगे, जितना डेसिमल पॉइंट डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है उतने डिजिट को काउंट करेंगे, और राइट हैंड साइड से उतने डिजिट को काउंट करने के बाद हम लोग डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे. तो यहाँ हम लोग को मल्टीप्लाई क्या करना था, 5.4 इंटू 16. तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट 54 इंटू 16. 54 इंटू 16 वी विल गेट. So first we will multiply 54 into 16. 54 into 16 we will get 864. 864. Now हम लोग देखे थे 5.4 था और 16 था,
तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे? 1। तो अब हम लोग एक डिजिट हम लोग राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे और उसके बाद हम लोग डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, मतलब 86.4 is the answer. Now come to the next question number 5. Find the product 7.6 into 2.4. In this question you will notice that there is the multiplication of decimal by the decimal number. So we will multiply the two decimals without the decimal point just like whole numbers. मतलब 7.6 भी हमारा डेसिमल नंबर है और 2.4 भी हमारा डेसिमल नंबर है, तो इसको हम लोग बिना डेसिमल के, विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एज अ होल नंबर. मतलब 7.6 को हम लोग कंसीडर करेंगे 76 और 2.4 को हम लोग कंसीडर करेंगे 24 और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद mark the decimal point in the product in such a way that the number of decimal places in the product is equal to the sum of the decimal place in the given decimals. मतलब 76 इंटू 24 जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को जो आंसर आएगा उस आंसर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं. 7.6 में 0.6 एक डिजिट है और 2.4 में भी एक डिजिट है, तो उन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, मतलब एक डिजिट और एक डिजिट, 2 डिजिट हो गया. 7.6 का एक और 2.4 का एक, मतलब 1 + 1 नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स कितने हो गए? 2. मतलब 76 और 24 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, 76 और 24 को जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को मिला 1824. और हम लोग यहाँ ऊपर में देखे थे कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितना है? 2. तो हम लोग 2 डिजिट्स को राइट साइड से काउंट करेंगे. 4 is the first one and 2 is the second one, and after that we will put the decimal. That means the answer is 18.24. Answer is 18.24. Now come to the next question. Question number 6. Find the product 13 into 1.3 into 0.13. So first we will multiply the numbers without the decimal point just as like a whole number. That means 13 into, we will remove the decimal point, 1.3 come into 13 and again 13. 13 into 13 into 13. So we will get 2197. Now you will see the first number is 13. There is no any decimal number. Again 1.3. The number of decimal digit is 1. And the third number is 0.13. The number of decimal digit is 2. So 0 plus 1 plus 2, we will get 3. So we will count the 3 digit from the right side in the answer and then we will put the decimal point. That means 7 is the one decimal, 9 is the second one and 1 is the third one. After that we will put the decimal. So answer is 2.197. Now come to the next question. Question number 7. Evaluate 1.2 whole square. That means 1.2 into 1.2. That means 1.2 into 1.2. So we will first multiply the number without the decimal point. That means 12 into 12. After multiplying 12 into 12, we will get 144. Now we will put the decimal mark. For putting the decimal mark, we will count the number of digit after the decimal point. 1 and the next 2. That means number of decimal digits are 2. So we will count the digit from the right side. So we will put the decimal. 4 is the first one and 4 is the second one. After that we will put the decimal mark. That means 1.2 into 1.2 we will get 1.45.
4 is the answer. Similarly, come to the next question. Question number 8. Evaluate 0.3 to the whole square. That means 0.3 is multiplied into 3 times. 0.3 into 0.3 into 0.3. After that, we will multiply these three numbers without the decimal point. That means 3 into 3 into 3. We will get 3 3 ja 9, 9 3 ja 27. For putting the decimal, we will count the number of digits after the decimal point. 1, 2 and 3. So, 0.3 into 0.3 into 0.3 is equal to 7 is the first digit, 2 is the second digit, and the third digit we don't know, so we will put the 0. After that we will put the decimal mark. So the answer will be decimal 0.027 is the answer. Now from the question number 9 we will study in our next class. Thank you, class.